cultural heritage into education systems. There will be more adequate infrastructures and all the expense programs with proper well-profiled libraries and the international collaborations and exposure of students to diverse perspective. I believe school would become the centers of excellence, nurturing the creatives as well, and thus the employment would rise and poverty would be eradicated. In health, I proudly say my Odisha is a role model. It has proved itself through COVID and even other programs. The government of Odisha, through Mamta scheme, which is Swasthya Kalyan Yojana, and others have tried to provide the quality in preventive and curative health services. By 2036, I envision Odisha to achieve universal health coverage by expansion of more medicals, employing more doctors, and by levying digital health technologies, providing proper medicines, advanced medical equipment to prevent disease and prioritize health and ensure holistic well-being and sanitation. From being the architects of society to making indispensable contribution to development, the women of Odisha have always proved themselves. And by 2036, I envision a Odisha where no agriculture will remain, where women will be uneducated. In sports, my Odisha will be more enthusiastic to promote it through various programs, and through science and technologies also will be improving in my Odisha by 2036. Disaster management, my Odisha has always proved itself, and by 2036, I believe Odisha will improve more in it. And in religion also, where we are known for its Jagannath culture, we will be improving more, and our religious diversity will be known for its individual well-being, social cohesion, and sustainable development. Along with it, the tourism sector shall also develop in Odisha as well as the industries. We know in judicial system, justice delayed is justice denied, and I expect my judicial system of 2036 Odisha will be more prone, and there would be specialized courts, emphasis on ADR methods, and efforts will be made to promote transparency and accountability even in cloth sectors. Before I conclude, I would like to say that in year 2036, my dream of Odisha will not just be a state of progress, but a beacon of innovation, and will witness a holistic development. And before I conclude, a few lines for my Odisha. ବ୍ୟक्त बारिधिर विशाल बेलाभूमि कनकमयी कननिका कीर्ति कराटिनी गुरु गंभीर तनाजिता तथा शस्य श्यामल समातुलକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏହି ମୋର ଛମ୍ୟ ଉତ୍କଳ सर्वश्रेष्ठ 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 धन्यवाद थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद समीक्षा आपणकर समीक्षा रे आमे अभिभूत प्रभावित एवं से स्वप्न की स्वप्न जहाँ सिंहरण न खेलाई दिए आपण सिंहरण खेलाई बहुत बहुत धन्यवाद एथर सुनिबा सौम्या पट्टनायक रेवेन्सा यूनिवर्सिटी द्वितीय वर्षर छात्री सौम्या आसंत आपण समस्तंकु नमस्कार respected dignitaries and everyone present here a very good afternoon मु मोर सारा जीवन इंग्रजी मीडियम रे पढ़ी की निज एजुकेशन कंप्लीट करिछि तो सेति पे जदी ओडिया कहला बेले किछिटा त्रुटि रहि जिवो पूर्वरु क्षमा मागी दउछि तथापि आमे जानु छे भाषा ही भविष्यत आ ओडिया बोली गर्व जदी करूछि चेष्टा करबी जेते हे परिबो ओडिया ही कहवा पाई जेतेबेले मु आजिरो कॉन्क्लेव रो टॉपिक ता देखिली ओडिशा 2036 a space for tomorrow mu prathamato nijoku pacharli what should be our aspirations as an Odia, as a youth, as a girl, as a student of economics, and most importantly as a youth on whose shoulder the responsibility lies to move ahead, to make all those dreams into reality. मु जे कहिबी सत कथाटा तो जेतबे इत्ते बड़ जिंसटा भाबिली कि इत्ते बड़ दायित्व आमरी शोल्डर्स रे रहुछि गोटी मोमेंट पाई भी इंटिमिडेट फील करिलिनी डरिलिनी कारण मु सेई पिला जे स्कूल रे पढ़ी की आसी छी कि भल पाठ पढ़ीबी कला घोड़ा रे चढ़ीबी मधु बाबू सह लढ़ीबी मु केबे भी
ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚ ଆକାଂକ୍ଷା ହିଁ ରଖିବି my dreams can never be small and therefore I understand that today as a state we stand at crossroads गोटे पटे हमर एक प्रकार जर्नी रही एक प्रकार मूवमेंट रही जोठी हमें वी हैव ट्रांजिशन फ्रॉम अ फेज जतबे ओडिसा को कनेक्ट करा होतला पॉवर्टी अमिट्स प्लेंटी रु we are today the number 1 state in food security. We have come a long way. Kintu say somewhere I also understand that there is a long way to go. And here are some of the points how I would like to envision the Odisha of my dreams in 2036. First of all, I understand that we have a huge demographic dividend. When Odisha reaches 100 years of its existence, we will be an exceptionally young state with a median age of only 30 years. I think आमे से समय रे हमर फोकस टा ए रहिबा कथा कि आमे हम यूथ को को भाबरे आगो को नै कि तंको स्किलिंग तंको रीस्किलिंग एवं अपस्किल करि पारुछे सो दैट से माने लेबर मार्केट रो चेंजिंग डायनामिक्स को देखि कि आगो को जाय कि जॉब मार्केट रे निजर पोजीशन करि पारुछंती and by youth I don't just mean universities रे पढुथिबा youth जो माने एजुकेशन रो बेनिफिट नै पारुछंती I also mean the tribal youth. I also mean the youth from the disadvantaged section. I also mean the youth who is engaged in agrarian labor. I also mean the youth who is working in the brick kiln. I need to bring all of them together and ame agu ku jai ki gote inclusive Odisha gote inclusive strategy ra saha agu ku jiba e hochi mor swapna ro Odisha. The second thing I would want to talk about is education. आमो literacy rates बहुत आगो को जाइछि आमो drop out rates बहुत खसी छी किंतु I want जतबे आमे ओडिसा 2036 देखुछे आमे देखिबा कि how do we perceive education as a passport to success or as an obligation to serve. कारण फिजिकल कैपिटल गोटे दिन रे बनै देई होई जिवो किंतु मोरल कैपिटल को बहुत समय लागेबो एंड आई थिंक इट इज टाइम दैट वी बिल्ड द मोरल कैपिटल फॉर आवर पीपल राइट नाउ. On the third important basis I would like to talk about is आमे देखि पारि छी हम हेल्थ केयर सेक्टर रे कोन लैक्यूना रही छी कोन लूपहोल रही छी एंड सेति पे ए आम पे आगामी दिन रे एह रही परिबो हमर गोटे गोल कि हम हेल्थ केयर सेक्टर को आमे आगो को केमिति नै जिबा ताको केमिति रोबस्ट बनेबा ताको केमिति डिसेंट्रलाइज करबा ताको केमिति प्रत्येकटी रिमोट एरिया जाई भी पहुंचै दे परिबा एटा रहितला मोर थर्ड इंपोर्टेंट पार्ट. And the fourth important thing I would want to talk about is, ame janiche we are presently in a era where we are going to face the future of work in the context of fourth industrial revolution, and AI, machine learning, and science and technology are going to be the drivers of change. A moment re I think our biggest achievement will be जदि आमे हमर डिजिटल डिवाइड को रिड्यूस कर दे परिबा आमे इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी को इंटरनेट क्वालिटी को आगु को नै कि लोकन को पखरे पहुंचै दे परिबा एटा रही परिबा हम पई गोटे बिगेस्ट अचीवमेंट बिकॉज़ जदि आमे इंटरनेट को पहुंचै दे पारुछे आमे लोकन को पखरे पावर आनी दे पारुछे. तापरे the fourth important thing I would like to talk about is the female labor force participation. Our SHG groups have done a wonderful job. I think our foundation has already been built in this regard. किंतु एबे टाइम आसुछि कि आमे ए जिंस को आगे नहीं सेमानन को माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स बनेबा तांको स्किल्स को आगो को आनेबा ओडिसा रे गोटे जॉब जनरेशन गोटे जॉब क्रिएशन गोटे एंटरप्रेन्योरशिप रो लहर आनी की रखिबा सो दैट हमर समस्त छात्र छात्री हुंतु द यूथ हुंतु आगो को जाय कि गोटे जॉब क्रिएशन रे गोटे स्टार्टअप कल्चर रे एंगेज हुंतु. किंतु ए सब स्वप्न सह मु एटा बिलीव को चाहेनी कि all of this we have to do in a sustainable way, because काली की we don't want कि our next generation someone like Greta Thunberg comes and says how dare you do this to my environment. So I think we have to do all of this keeping in mind the impacts of climate change. एमती कहबा को गले तो बहुत गुडे जिंस अछि. I'm sure our speakers mane bahut kichi kahi thibe regarding this.
सेमानकर कथा अनुसार जेमती wherever we want Odisha to be, wherever we wish Odisha to be, I would remind my youth friends here that where Odisha will be depends on you and me. And so this is the effort that you and I have to take. So as they say, the journey of 1,000 miles begins with a single step. So I think it is you and I who have to make this step ahead. मु स्कूल रे उत्कल भारती कुंतला कुमारी सावत को गोटे कविता टी पढ़ी वन फूल उद्यान कुसुम से लेखाई कि वन फूलटी बण रे फुटी निजर बास विस्तारिला किंतु केही ताहाकु जानि पारिलेनी। चिंता करिली कि कौन ओडिशा भी से वन फूल परी इंडियाज बेस्ट केप्ट सीक्रेट हे रही जबो। मन भितरु दृढ़ शब्द रे आसिला ना, I think it is time we unravel this mystery before the entire world and show to the entire world who Odias really are. Thank you. बंधुगण 2036 स्वर्णिममय होवाई जाऊे एक कथार प्रतिश्रुति आज मंच मिलूँ सत किंतु दुई भौणी परस्पर निज निजस्व कथा को रखिले एबे एकाठी एका स्वर रे निज मनर कथा को एवं एठारे उपस्थित थिबा प्रत्येकटी नारी शक्तिंकर कथा को रखिया पई जाउछन्ती। अनुरोध करबी नारी शक्तिर ओडिशा हो, भविष्यतमुखी ओडिशा हो, स्वर्णिम ओडिशा हो, ए प्रतिश्रुति आमे समस्त नबा एवं करताळे दे आज रे समस्त काम को संवर्धित करबा। नमस्कार आज्ञा। ओडिशा माटीर झियो मु, ओडिया को नहीं गर्व करे मु। कथारे अछि उच्च हवा को कर जेबे आशा, उच्च कर आग निज मातृभाषा। मु चाहूची ओडिशा माटीर झिए होइतिबारे आमे ग्लोबल ओडिया दरकार हेले इंग्रजी कहबो किंतु निज ओडिशा भाषार मान मर्यादा आ महत्व को सब बेले आगे रखिबु। आम पई प्रथमे आमे ओडिया आ जोटिक जिबु आमे निजको गोटे ओडिया बेली गर्वित अनुभव करिबु। मु ओडिशा माटीर झियो, मु जुआडे जाए किंतु सब क्षेत्र रे मु मो ओडिया को प्राधान्य देबी आ ओडिशा को सब बेले ऊपर रखिबी आ चेष्टा करिबी सारा दुनिया रे सारा भारत रे ओडिशा ना सब बेले प्रथम रहू और ओडिया लैंग्वेज सब बेले जय जगत रहू। धन्यवाद धन्यवाद। जेमेति कुहा गला कि ए सबु जहाँ भी हमरो ए जहाँ भी हमरो सब विचार रही छी कि हमें केमिति ओडिशा को आगु को नहीं जिबा, ए सबु सेतेबेले ही हेई परिबो जेतेबेले हमें ओडिशा प्रति निजर आइडेंटिटी प्रति निजर प्राउड ओडिया आइडेंटिटी को नहीं कि आगु को बढ़िबा, जेतेबेले हमें जानिबा कि भाषा ही हमरो भविष्यत। धन्यवाद। बंधुगण ओडिशार स्वाभिमान प्रतीक उत्कल गौरव मधुसूदन दास 1903 मसीहा अर्थात आज को 121 वर्ष पूर्वे उत्कल सम्मेलन आह्वान करते। मधुसूदन दास को आधुनिक ओडिशार जनक कहले अत्युक्ति हम ना। केवल मधुसूदन दास नुहंती, ओडिशा माटी तांको परी बहु महान व्यक्तित्व को जन्म देछि जहाँकर दाद हिसाब रे आम आज निजको धन्य मन कर। बहु बाधा विघ्न बहु अनाटन सत्वे देश पाई जाति पाई उच्च अभिलाष तांक मन रे थिला एवं दूरदृष्टि थिला गोटे आगामी भविष्यतर। दूरदृष्टि बा भविष्यत इंग्राजी भाषा रे कहा जाए विजन एवं एपरी महान व्यक्ति को विजनरी आख्या दिया जाए। विजन शब्दटीर उत्पत्ति लैटिन शब्द विडिएर रु यार अर्थ देखि पारिबार क्षमता, किंतु गभीर भाव में जदि आपण भाविबे असाधारण दृष्टि शक्ति, विजन रो अर्थ होला असाधारण दृष्टि शक्ति जहाँ बुद्धिमता संगे संयोजित। अनेक क्षेत्र रे एपरी विशेष गुणर अधिकारी मानकर अति भौतिक दृष्टि शक्ति थाए जहाँ बल से माने गोटे अनागत भविष्यतर छवि परिष्कार भाव में देखि पारंती। अमेरिकन फ्यूचरोलॉजिस्ट जोएल बार्कर को कहवा कथा ए विजन बा भविष्यत को देखि पारिबार क्षमता जेकोसी नेता जेकोसी नेतृपद वाच्य व्यक्तिंकर विशेष भाव में रहिबा दरकार।
गोटे देशर साधारण मनीष को भविष्योन्मुखी कर तोलिबार दायित्व ग्रहण करने को हेब। वर्तमान कथा हवा एहीपरि लोकंकर चारित्रिक विशेषत्व कौन रहिबा दरकार। उत्कल गौरव मधुसूदन ठारू प्रबाद पुरुष विजयानंद पट्टनायक परि विजनरी व्यक्ति माने सेमानकर प्रथम गुणटी है पुरातन को त्याग करी भविष्यत को स्वागत करि परिवार आत्मविश्वास। जहाँ पुरातन ताहा हुए आमर बहुत प्रिय, किंतु ताहा को धरी रखियो को जाई तार बेड़ी श्रृंखल रे आबद्ध हो गले आमे आगु को बढ़ी परिबा नाही। एक दिगरे आम इतिहास आमको परिचिति दे थाए, अन्य दिगरे इतिहास दासत्व रे बंधा पड़ी गले व्यक्ति हो बा जाति से भविष्यतर यात्री होई परिबो नाही। स्मृति सर्वस्व व्यक्ति पक्षरे स्वप्न देखिबा संभव नुहे। बोईतटीए नदी पार हवा को गले ताकू आग कूल को छाड़वा को हुए, किंतु गोटे जातिर भविष्यत पाई स्वप्न देखिबार प्रयास मन को आनिबा मात्रे आतंकित लागे। भविष्यत पाई नक्साटीर सबु किछि टिकी निखी जणा नथिले आमे आगु को जीवार प्रयास करिबारे विब्रत होई पडु। से पथर संपूर्ण विवरणी नाही। जे पथरे जणा ठारू अजणा अधिक से पथर पथिक हेले अजणा विपन्न संकट रो परिस्थितिर संभावना रही थाए। भाबिबार कथा 1942 मसीह महात्मा गांधी जदि एपरी भावना मन को आनी थांते आज मध्य हुए तो आमे पराधीनतार बेड़ी श्रृंखल आबद्ध रही थांते। महात्मा भारत छाड़ स्लोगान रे एक प्रांजल भविष्यतर स्पष्ट चित्र नथिला, थिला केवल स्वाधीनतार स्वप्न। किंतु प्रश्न उठे वर्तमान वास्तवतार विच्युत होई भविष्यतर बाट चलिबा कोन सतरे संभव? एइठारे कहि रखिबा दरकार पृथ्वी रे दुई रकम मनीष अछंती। अधिकांश मनीष पाद बढ़ाइबा आगुरु बाट खोजंती। महात्मा गांधी बाट खोजी नथिले, बाट काढ़ी थिले। नूतन मार्ग सृष्टि करी जाति को कहले आस एई बाटरे चलिबा। निज व्यक्तिगत जीवन हेउ बा सामाजिक सत्ता हो, जेबे भी कौनसी नूतन स्वप्न आसे आमे त्रस्त होई पड़ू। चारिआडू को चाहि शून्यता देखू, नाही नाही रे हृदय आंदोलित होई उठे। प्रत्येक जिनिस पई धन जन बलर आवश्यकता निश्चय अछि, किंतु सेति प्रति प्रथम जदि जने विह्वलित होई पड़िबो ता पक्षरा आगु को पाद रखिबा संभव नुहे। उत्कलमणि गोपबंधु दासंक पारे कौन थिला? पुरीर गोटे मठरू पुराणा छपा मेसीन खंडे किणी सत्यवादी रु समाज खबर कागज आरंभ करथिले। भारत रत्न मदर टेरेसा आर्क बिशपंक ठारू 25 टंका नहीं मिशनरीज ऑफ चैरिटी गढ़ी। से मनीषटी ही स्वप्न देखि पारे जे नाही नाही रे नुह, जे अच्छी अच्छी रे विश्वास रखे। किंतु अनुष्ठान जाति गढ़ा को गले केवल स्वप्न देखले हब नाही, स्वप्न को संभावना एवं संभावना को साकार करने को पड़िबो। आ स्वप्न को साकार करने को गले मनीष जदि विफल हो जाए ताहले कौन हब? कथाटी भाबिबा मात्रे विफलतार भय ग्रास करे, मनरे घटी जाए अमावस्यार अंधार, आउ सेई मुहूर्त रे मनीष हारी जाए। तेबे महान जननायक मानकर जीवन कहानी देखिले गोटे जिनिस परिष्कार भाव फुटी उठे। एई व्यक्ति माने भविष्यतर ब्लूप्रिंट तैयारी कला बेले असफल जे हेई परिबे से संभावना मन को केबे आनी नथिले, से संभावना को मन रे केबे स्थान देई नथिले। जो बढ़ई कोणार्क मंदिर गढ़ी से विफलतार सामान्यतम संभावना को मन रे प्रश्रय देई नथिले। परवर्ती समय रे सागर लहरी आसी पत्थर पर पत्थर टाणी नेला, किंतु बिंधाणीर स्वप्न को भांगी पारि नथिला। महानदी नराज घाट बंगोपसागर बक्ष चिरी मास मास पाल भिड़ी आहुला टाणी दिनर खरा रातिर अंधार भेदी जो ओडिया बणिक जाभा सुमात्रा पारी करूला, से जदि सफलता और विफलतार तर्जमार पड़ जाता आमे आज बालीजात्रार समारोह देखु न था। स्वप्न देखिबार क्षमता हासिल करने को हेले आउ गोटे विशेष गुण को निजर करने को पड़िबो। भविष्यत मात्रे अनागत। जनमानसर शब्दकोश रे अनागत शब्दर अर्थ समय रे अनेक समय रे जहा असंभव। समाज तथाकथित पुरोधा माननकु वर्तमान ही अधिक सुहाई थाए। वर्तमान अस्तित्व रे तांकर स्वार्थ निहित। एइथिपाई जुग जुग धरी नूतन आह्वान करुथुवा व्यक्ति को समाज बासंद करिवार अनेक उदाहरण रही। हजार हजार वर्ष धरी मानव जातिर धारणा थिला
पृथ्वी स्थिर निश्चल एवं सूर्य चंद्र ता चारिपटे घूरी बुलुचंती गैलीलियो जो दिन कहले पृथ्वी सूर्य को प्रदक्षिण करुछि तांको गभीर समालोचनार शिकार होबाक पड़िथिला मानव इतिहास रे जेबे भी कौनसी व्यक्ति नूतनतार संदेश आनी देछि ताको अनेक क्षेत्र में मिली उत्पीड़न एवं अत्याचार लोकप्रियतार उपासक माने दैनंदिन लोकमत बाहर को जाई पारंती नहीं जीवार साहस न थाए भविष्यतर स्वप्न देखा दंभ दरकार निज पाई विजन टे गढ़िबा एवं देश जाति समाज पाई गोटे सामग्रिक स्वप्न देखा मध्य गोटे विराट बड़ तफात रही व्यक्तिगत स्वप्नर साफल्यर अधिकारी मु किंतु सामूहिक स्वप्नर परवर्ती अध्याय रे जदि मो पाई स्थान टे न रहिबो से विपद मध्य रही पारे सामूहिक सफलता रे जदि व्यक्ति विफलता आसी जाए तेबे स्वप्नटी दुस्वप्न हो जाए व्यस्त हो पड़ू अचानक सते कि भूल ट्रेन रे बसी जाइछु किंतु आमरी भितर उत्कलमणि गोपबंधुकर उदाहरण रही जे देशवासी भविष्य कामना करी कहते मिशु मोर देह ए देश माटी रे देशवासी चली जातु पिठी रे अंध कवि भीम बोई कही गले प्राणीर आरत दुख प्रमित देखु देखु केबा सहु मो जीवन पछे नरके पड़ी थाउ जगत उद्धार हो संकीर्ण स्वार्थ उत्तर जीविता आउ जाति पाई स्वप्न देखा मध्य रही आकाश एवं पाताल पार्थक्य गोटे राज्य पाई सामूहिक स्वप्न देखा कौन छोट पर्दार विषय वस्तु नुहे से ही स्वप्नटी यथार्थ जहाँ बड़ पर्दार विस्मयकर एवं सिंहरण जगाउथुबा गोटे स्वप्न क्रिस्टोफर कोलंबस स्वप्न देखिबे जाई पथभ्रष्ट होइथिले बेले बेले पथभ्रष्ट होबाक पड़िबो आसी थिले भारत वर्ष खोजिबा को पहुंची गले अमेरिका भविष्यतर स्वप्न देखा गले सांप्रतिक समाज चेतना को प्रश्नर काठगड़ा रे ठिया करने को पड़िबो से स्वप्न साकार करने को जे समस्ते आपणा छाए आपे आपे चली आसबे ता नुहे से तो कविगुरु रवींद्रनाथ कहते जदि तोर डाक शुने क्यों ना आसे तबे एकला चलो रे स्वप्न को साकार करने को गोटे मनीष गोटे पाद आगे आसवा पड़ो तापर ही साधारण जनमानव आगे आसबे हाथ धरिबे अंटा भिड़े आउ से साधारण मनीष बल एक असाधारण भविष्य बाट खोली बंधुगण समय आसछि आम गण रे अछंती आम 5T रे अध्यक्ष श्रीजुक्त कार्तिक पांडियान तांकर मुहरु आमे दीपक सुनिबा तांकर मनरे विजन 2036 रो कोन कथा रही श्रीजुक्त कार्तिक पांडियान थैंक यू सर जय जगन्नाथ ए भितर किए स्टूडेंट्स अच्छे टिके हाथ उठेले 80% थैंक यू किए पीजी स्टूडेंट अच्छे हाथ उठेले पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट 40% अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट ओके स्कूल स्टूडेंट्स के भी नहांती सो मोस्टली इट इज कॉलेज यूजी और पीजी स्टूडेंट्स बेसी भूख लगुच कि केते टाइम मते देबे केते टाइम लास्ट स्पीकर बिफोर लंच बहुत टफ चैलेंज मु बहुत कमरे सरदीबी मो आगु आपण 5टा यस के शुणुंट सुब्रत संतृप्त सच्चिदानंद स्वप्नेन्दु समीक्षा सौम्य 5टा यस सक्सेस हबार अच्छी ताले यस दरकार ना डेफिनेटली देखंतु केमिति स्पीकर सेलेक्ट करछंती सब यस ये भितर गोटे वी कौन करी बोधे भाविबा मुझे निजे को मुझे कोई भी वी इज आल्सो विक्ट्री वी इज आल्सो सक्सेस सो 5 S and 1 V are going to आपण मान सागर कथा हबार अच्छी भल 6टा स्पीकर टा बहुत भल नंबर आपण माने किए भी स्पिरिचुअल ये रे थिबे नंबर 6 इज ए वेरी गुड नंबर ऑस्पिशियस नंबर सो आमे 2036 रा कथा
छह जन पाखु आरंभ करुचु से भितर भी छह जन भितर 5 जन सक्सेस और जने टिके विक्ट्री करने चेष्टा करुछंती आदा भी बहुत बहुत धन्यवाद आपण माने जो बड़ी भाबरे कोइले तापरे कोई बात किछि नहीं both the students spoke so well very inspiring बहुत प्रेरणा मिलुची स्वप्नेंदु जने इंटरनेशनल नुआ वर्ल्ड इकोनॉमी रे ना कमाई चंती थैंक्स फॉर कमिंग डॉक्टर पांडा जदि हमें कोई भी दुई वन स्टेप बिफोर द नोबेल प्राइज थैंक्स फॉर कमिंग और बागची सार कथा तो कोई बात दरकार नहीं डॉक्टर संतृप्त has been a flag bearer for Odisha not just nationally but internationally we are very proud that say iti ama sangare ochonti और से दुई जन पिला किए भी कोइले very proud बहुत गर्व लगुची तांकर कथा सुनी की मु कोन कहबी प्रथम रे गोटे मु करेक्शन करिबी हमारा टार्गेट ता आपण माने जानिथिबे भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री आरंभ करके समस्त जबे भी टार्गेट कहबे 100 years of independence 2047 रे भारत वर्ष कोटी पहुंचीबार अछि कोन स्वप्न अछि सेटा करिबार ले कोन कोन करिबार अछि हमारा टार्गेट रोची सेतरु 11 वर्ष कम रे 2036 हम ऊपर बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी अछि हमें 2047 पर्यंत अपेक्षा करि पारिबु नै हमारा टार्गेट 2036 किंतु 2036 हेले हमें केबे भी गोटे प्लानिंग करिबु एटलीस्ट 2 वर्षर बफर दरकार 2 वर्षर बफर दरकार सो हम टार्गेट और कमी जिवो 2034 नॉट 2036 2036 अचीव करिवार अछि ताले 2024 पे हमें प्लान करिवा पड़िबो 2034 पे एबे हमें कोतरे ओछु को ईयर रे ओछु पिला माने जोर रे 2024 रे ओछु सो हाउ मेनी इयर्स वी गॉट नाउ टू 2034 मात्र ठीक है कोहंतु ताले मु जानिबे आपण माने अलर्ट होचंती और केते वर्ष होची मात्र 10 वर्ष होची ओनली 10 इयर्स एमिति पळाइबो 10 वर्ष सो हम टार्गेट टा रीडिफाइन करिवा पड़िबो हम टार्गेट टा 2036 नहीं 2034 एवं मात्र 10 वर्ष होची भारत वर्ष पे 2047 बहुत टाइम होची किंतु ओडिशा पे बहुत कम टाइम होची आपण माने देखिथिबे सब बेले हमें चेंज कोता कहिदिलु एटा के चेंज करिवार अछि एजुकेशन टा के चेंज करिवार अछि हेल्थ रे चेंज करिवार अछि परिवर्तन आनिबार अछि इंफ्रास्ट्रक्चर रे परिवर्तन आनिबार अछि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रे परिवर्तन आनिबार अछि हठात गोटे चेंज हैला 2019 परे से चेंज वर्ड टा के रिप्लेस करा गला ट्रांसफॉर्मेशन रूपांतरीकरण गियर चेंज हैला ओडिसा रे गियर चेंज हैला 500 वर्ष रे जो भी काम है नहीं तिला सेटा के 3 वर्ष रे हम प्रिय मुख्यमंत्री महाप्रभुंकर आशीर्वाद रे पूरी परिक्रमा प्रोजेक्ट करके देखेले हमें जो भी रास्ता रे आसुचु हमारा बागची सार आरंभ करके समस्त किछि किछि ज्ञान देइचंती से ऊपरे मु बेसी पछपक जिबि नै नियर पास्ट रे लेट्स टेक फ्रॉम द न्यू मिलेनियम 2000 हमें को रास्ता रे आसुचु से रास्ता जदि देखिबु ताले हमें कोटी पहुंची पारिबु से ऊपर गोटे आत्मविश्वास आसीबो ओनली सेटा को मु एक्सप्लेन करिबे आपण मानक आज भी हमें एबे सुधा डिफाइन करि पारु नै व्हाट इज द नुआ ओडिसा कोन और सशक्त ओडिसा कोन हमें जदि आज डिफाइन कर देबु सेटा और 3 वर्ष परे सेटा रिलेवेंट रहिबो नै इट हैज टू बी अ फ्लेक्सिबल टारगेट इट हैज टू बी अ फ्लेक्सिबल टारगेट कोतरे आपण समस्त कंट्रीब्यूट करिवे वर्ल्ड रे जो भी बल जिंस होची सेटा की इनकलकेट करिवा पड़िबो इनकॉर्पोरेट करिवा पड़िबो इट हैज टू बी अ डायनामिक प्लान सो आज ही हमें डिफाइन करिबा नै
what is Nuwa Odisha, what is empowered Odisha. It is an idea, it is an objective, it is a theme, aspirational theme. कोटी हमें पहुंचे बार होची, किंतु रास्ता हमें डिसाइड करिवा पड़ियो को रास्ता रे हमें जिबु. आपण के एबे जो भी हमें 20-25 वर्ष रास्ता को मु देखेबी ताले आपण जानिबे और कोटी हमें पहुंचे बार होची. किए भावितिले 2000 मसीहा रे 70% लोग गरीब जनसाधारण होचंती ओडिसा रे और 20-22 वर्ष भितरे सेटा 11% के कमी गो. कहार मनरे स्वप्न थिला. Who dreamt that 2000 रे 68% poverty rate थिला आज 11% रे पहुंचुची. That is the trajectory which we have followed. ओडिसा रे बात्या आसीबो, बन्या आसीबो, सुपर साइक्लोन आसीबो. हमारा लोकेशन टा जेमती 1999 सुपर साइक्लोन आमे देखिथिलु. 10,000 precious human lives were lost. सारा दुनिया रे आम ऊपर एडिटोरियल लिखा गला, एते खराब मैनेजमेंट करा गला बोली कि लिखा गला. सही समय रे किए भाबितिले 2012 मसीहा रे गोटे सुपर साइक्लोन आसीबो. से सुपर साइक्लोन रे आमे सबु जीवन को बंचेबु, गोटे जीवन भी हरेबा को दबु नहीं. एवं न्यूयॉर्क टाइम्स रे फ्रंट पेज एडिटोरियल आसीबो. जदी लोकों को बंचेबार अछि नेचुरल कैलामिटी रे ओडिसा बोली के गोटे राज्य अछि सेइटु सिकिबे. न्यूयॉर्क टाइम्स रे फ्रंट पेज आर्टिकल आसीबो. ए रास्ता रे हम आसछु. 2000 मसीहा रे निज खाद्य सुरक्षा पे हमें पंजाब हरियाणा ऊपर निर्भर करतलु. तांका पकरू ट्रेन रे चावल आसिले आम घर घर रे चावल पहुंचीतिला. एबे 2017-18 रु एटलिस्ट 5टा राज्य आम ओडिसा रु ट्रेन आसीबो बोली का अपेक्षा करछंती. एटा होची परिवर्तन, रूपांतरीकरण. फूड सिक्योरिटी रे कोन प्रभाव पकैछंती आम प्रिय मुख्यमंत्री. We are the third largest contributor for food security. 2000 मसीहा रे हमें कोटी थिलु, एबे हमें कोटी होछु. हेल्थ मु तो कोई भी नहीं 2000 मसीहा रे हमें कोटी थिलु हेल्थ रे कोई बा भला हबो नहीं. किंतु आजी जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी रु आरंभ करिकी स्टैनफोर्ड ये सब यूनिवर्सिटी रे रिसर्च करछंती. ओडिशा वाली गोटे राज्य कोविड महामारी की केमिति मुकाबला कले को द्वारा सारा भारत वर्ष रे फैटालिटी रेट सबुटु कम तिला. ओडिशा रे सबुटु अधिक लोग को बंचेबारे सक्षम हल्ले ओडिशा. 22टा राज्य को हमें ऑक्सीजन पटे पारिलु. प्रतिदिन 40,000 लोक मानकर जीवन बंचेबारे ओडिशा रो भूमिका तिला. सारा भारत वर्ष रे 40,000 लोग ओडिशा रो ऑक्सीजन आसिले कोविड टाइम रे बंची तिले. 2000 रे आपण कोटी तिले, 2020 रे आपण कोटी पहुंचले कोविड टाइम रे. हमें डॉक्टर सरप्लस हेबा को जाउचू. सब बेले हमें कहितलु डॉक्टर अभाव और वर्ष भितरे हमें डॉक्टर सरप्लस हेबा पे जाउचू. रेवेन्यू सरप्लस, फूड सरप्लस, डॉक्टर सरप्लस स्वप्न ओलिया लगुची ओडिशा पे. किंतु स्वप्नटा आज साकार हेछि. एई रास्ता रे हमें आसछु. एसीबी मेडिकल कॉलेज आपण देखिबे और वर्ष भितरे इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री, परहैप्स वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड. ओडिशा रे टैलेंटेड डॉक्टर कम नहीं. हमारा डॉक्टर रमाकांत पांडा इज द बेस्ट हार्ट सर्जन इन द कंट्री. Dr. Subrata Acharya is the best gastroenterologist in the country. हमारा शंकर आचार्य is known for spinal surgery in the country. और बहुत लोग होचंती हमारा डॉक्टर माने आसीबे ओडिशा रे काम करिबे. जदी हमें इकोसिस्टम क्रिएट करिबो एटी मेडिकल टूरिज्म हबो. आमा लोग बाहर के जिबे नहीं, बाहर लोग 80 आसीबे 80 ट्रीटमेंट करिबे. एटा होची नुवा ओडिशा. एजुकेशन को राज्य तांकरा सबु हाई स्कूल के 2 वर्ष भितरे रूपांतरीकरण करुची 5T जोरिया रे. सबु ब्लैक बोर्ड को बदली करिकी स्मार्ट बोर्ड लगाएची. जदि आम पिला माने
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखिबार अछि ब्लॉकचेन रे अनुभूति नबार अछि ताले हाई स्कूल लेवल रे आमे स्मार्ट क्लास इंट्रोड्यूस करिबो और कौन सी राज्य करुणांती ओनली ओडिशा करुची ओडिशा रे तिबा 8640 स्कूल को मान्यवर मुख्यमंत्री रूपांतरीकरण करचंती हाई स्कूल सबुर रूपांतरीकरण हे सारिची और 3 मास भितर कॉलेज एवं हायर सेकेंडरी स्कूल रे मध्य रूपांतरीकरण हबो आपण बाबंतु व्हाट काइंड ऑफ एक्सेस digital access the children of Odisha will have. There will be a leap, there will be a huge jump. The kind of human resources we will be creating, qualitative and quantitative means. ये सब स्वप्न भलिया लागिबो हमक ओडिशा गोटे चासी ऊपर निर्भर करिबा राज्य आमे सब कुछ काम करूछु चासी भी काम करिबार अछि 2000 मसिया रे हमरा इरिगेशन फैसिलिटी तिला 33 लाख एकर्स नेक्स्ट 12 वर्ष रे 10-12 वर्ष रे आमे 10 लाख एकर ऐड करलु नेक्स्ट 10 लाख एकर ऑर्डर करलु 6 वर्ष रे नेक्स्ट 10 लाख एकर ऑर्डर करलु 3 वर्ष रे एटा होची स्पीड ऑफ ग्रोथ इन ओडिशा स्पीड ऑफ ग्रोथ इन इरिगेशन आपणकर 33 लाख एकर्स आज 65 लाख एकर्स रे पहुंची फर्स्ट 10 लाख एकर पे हमको 12 वर्ष लगिला सेकंड 10 लाख एकर पे हमको 6 वर्ष लगिला एबे हमें 3-3.5 वर्ष रे नेक्स्ट 10 लाख एकर रे पहुंचबो आपण बाबंतु कोन प्रभाव पकइबो ओडिशा रा चासी भाई भौणी मानकर आर्थिक सशक्तकरण रे कोन प्रभाव पकइबो ए जलसेचन व्यवस्था आपण माने जानी की खुशी हेबे ओडिशा केबे 2000 मसिया रे आमे इन्वेस्टमेंट पाइबा रे सबुटु तळ राज्य रे थिलु सबुटु तळ राज्य रे के भाबितिबे के स्वप्न रे करतिबे ओडिशा इन्वेस्टमेंट अनिबारे 2 नंबर रे पहुंचीबो 2 नंबर रे आम ऊपर ओनली महाराष्ट्र होची आजिका दिन रे दिस इज ऑफिशियल ऑथेंटिक डाटा मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट रे आमे 2 नंबर रे होचू वी आर गेटिंग वन ऑफ द बिगेस्ट स्टील प्लांट इन द वर्ल्ड ArcelorMittal Nippon we are getting one of the green steel plants in the world JSW आमे भारत वर्षर सबुटु फर्स्ट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट आणुछु ACME Japan collaboration रे we are the first state to sign with JSW for electronic vehicle manufacturing वेल्सपन बोली के आपण माने गोटे कंपनी जहां सुनिथिबे जदि अमेरिका रे 3टा टवल बिक्री होउची टर्किश टवल 3टा रे गोटे टवल वेल्सपन कंपनी करूची एटा गुजरात रे होची गुजरात रे तिला सेम फुल सेटअप रे इटी 14 कटक आछंती वेल्सपन 10,000 20,000 25,000 पिला मानकर रोजगार पाइबे दिस इज द स्केल इन विच वी आर डूइंग इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेबसाइट का आपण देखिबे अनएम्प्लॉयमेंट रेट रे सारा भारत वर्ष रे सबुटु तळरे होची ओडिशा एटा आमे कहू नहीं भारत सरकार अनएम्प्लॉयमेंट रेट मॉनिटरिंग एजेंसी तांकर डाटा रे कहूची दिस इज द के भाबितिबे ओडिशा विल हैव द लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट के भाबितिबे ओडिशा विल हैव द हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट किए भाबितिबे 2-3 वर्ष रे द टॉप 5 बोली के कुवंती आईटी रे एक्सेंचर कॉग्निजेंट डेलाइट आईबीएम सबु आसीबो ओडिशा के दे विल हैव एड्रेस इन ओडिशा किए भाबितिले समस्त मेट्रो को जाइतिले मेट्रो परे और नेक्स्ट लेवल ऑफ मेट्रो को जाइतिले पुणे जाइतिले हैदराबाद जाइतिले बट नाउ ओडिशा हैज मेड एन आइडेंटिटी दैट वी आर अ ग्रीन आईटी कैपिटल दैट्स न्यू ओडिशा ये सब हमें कलु मु भूली गली और गोटे भल जिनस कहवा के आपण माने गूगल करके देखि पारिबे 2000 मसिया रे निजे एम्प्लॉय मानक पे दरमा दबा पे हमको टंका नहीं तिला तो 6 मास लगितिला 3 मास लगितिला दरमा दबा पे लोन रे बुड़ी जाइतिला ओडिशा
डेवलपमेंट स्कीम करिवा कोता तो छाड़ दियंतु चांस नहीं थिला आज ओडिशा वची रेवेन्यू सरप्लस रे सारा भारत वर्ष रे एक नंबर सारा भारत वर्ष रे एक नंबर ओडिशा our revenue surplus has surpassed every other state our debt ratio munda picha loan kammi ke aschi we are one of the lowest states to have debt per capita debt ratio स्वप्न भलिया लागिथिबो 2000 मसिया रे को राज्य सबुटु तळे थिला खाइबारे स्वास्थ्य रे इंफ्रास्ट्रक्चर रे इन्वेस्टमेंट रे जस्ट 20 वर्ष 22 वर्ष भितर कोटी पहुंची गला ओडिशा और ये सब माइलस्टोन सब हमें क्रॉस करके आसिलु वी डिडंट कॉम्प्रोमाइज ऑन सम थिंग्स कोन कोन हमें कॉम्प्रोमाइज करू नहीं सेटा भी आपण मानन को कोई भी ओडिशा रे जदि आपण एते डेवलपमेंट करिबे एते इंडस्ट्री आनिबे एते इन्वेस्टमेंट आनिबे एते प्रकार चेंज आनिबे इरिगेशन करिबे ताले आपणकर फर्स्ट इंपैक्ट पड़िबो फॉरेस्ट कवर ऊपरे फॉरेस्ट कवर कोन हला ओडिशा रे द ओनली स्टेट और वन ऑफ द 3 स्टेट्स कोतरे फॉरेस्ट कवर अधिका अधिका हे की चलुची फॉरेस्ट कवर इन ओडिशा इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर हमें ये सब काम करिबा बेले जो भी वल्नरेबल सेक्शन बोली की कुआ जाए सोसाइटी रे whether it is tribals whether it is women whether it is regional imbalance ये 3 टाका में आखिर रखी की आगे असचू this entire development when development has happened transformation has happened taking and empowering the tribal people of Odisha the most vulnerable people of Odisha and women empowerment तो मु कोइबा दरकार नहीं महिला सशक्तिकरण रे ओडिशा आजी एक नंबर रे अछि 50% महिला मानक राजनीतिक सशक्तिकरण करिबा पे माननीय मुख्यमंत्री रिजर्वेशन दैछंती 50% रिजर्वेशन दैछंती one of the few states who have done it मिशन शक्ति जोरिया रे मा मानक सशक्त करिबा रे आपण माने जानि की खुशी हेबे गत वर्ष मिशन शक्ति रे मा माने 12,000 कोटी टंका लोन नहीं चंती 12,000 कोटी टंका गोटे वर्ष रे मु जानिबा पाइली एई वर्ष 15,000 कोटी टंका लोन नेबे जदि ये 15,000 कोटी टंका लोन नेबे ताले बाबंतु तांका परिवार रे कोन प्रभाव पकैबो तांकर गां रे कोन प्रभाव पकैबो आगरु ये सब समस्त महाजन पकरे जाई की लोन नहीं तिले सुना भी कितिले जमी भी कितिले आजी बैंक रे जाई की 0% रे जदि 15,000 कोटी टंका गोटे वर्ष रे लोन नेबे सी द इंपैक्ट इट विल हैव ऑन द वुमन ऑफ द स्टेट ये सब करिबा बेले मान्यवर मुख्यमंत्री ये सब करिबा बेले आपण को शॉर्टकट नेबा को पड़िबो कि ट्रांसपेरेंसी रे कॉम्प्रोमाइज करिबा को पड़िबो कि सेटा भी करले ने हम प्रिय मुख्यमंत्री when he did this transformation he ensured transparency in every breadth of Odisha every length and breadth of Odisha से transparency टाके enforce कर ले आमा राज्य हमें गर्वित आपण कोटी भी जाई की बुझिबे से माने इंडस्ट्रियलिस्ट हुंतु कॉन्ट्रैक्टर हुंतु सर्विस प्रोवाइडर हुंतु समस्त हुंती आपण को ओडिसा रे जाई की ओडिसा रे इन्वेस्टमेंट करिबा इसी ओडिसा रे जाई की बिजनेस करिबा इसी सर्विस प्रोवाइड करिबा इसी काई की देयर इज ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस स्वच्छता ये सब करिबा बेले स्वच्छता को कॉम्प्रोमाइज करू नहीं आम सरकार आम प्रिय मुख्यमंत्री और कौन इंपोर्टेंट जदि आम ये सब करिबा बेले आपण लोकंकर सम्मान भी रखिबार अछि फाइनली वी ऑल वर्क फॉर द पीपल मान्यवर मुख्यमंत्री ये सब करिबा बेले भी मो सरकार के इंट्रोड्यूस करले कौतरे लोक मानक सम्मान को गुरुत्व देले आपण जो भी सरकारी कार्यालय की जिबे जो भी सरकारी सर्विस नेबे आपण मानक पकरु फीडबैक निया जिवो दिस फीडबैक सिस्टम टेकिंग फ्रॉम पीपल ऑफ ओडिशा सिटीजन्स ऑफ ओडिशा is something which is very unique and this is to restore or provide dignity for the citizens of the state
और कौन सी राज्य करुणांती ओनली आम प्रिय मुख्यमंत्री ओडिशा करुची एटाक ये सब करबा बेले आमे आम स्पिरिचुअल गवर्नेंस को भी कॉम्प्रोमाइज करू नहीं आमे जदि कोई बार अछि ओडिशा रे Odisha has done spiritual governance. It's not bureaucratic governance. It is not political governance. माननीय मुख्यमंत्री has done a spiritual governance. यदि ये spiritual governance नहीं, ताले इतने बड़ा संख्या रे परिवर्तन, इतने बड़ा संख्या रे transformation, हमारा scope ही नहीं. Spiritual governance, I mean, not just secular governance. Spiritual governance, I mean, it's guided by spiritual values, swachhata, namrata, भगवान ऊपर विश्वास करिकी महाप्रभुंकर विश्वास करिकी सबु काम रे तांक सामने रखिकी ओडिशा वासी का आगे नबारे सक्षम हेचंती आम प्रिय मुख्यमंत्री. This is the road which we have traveled so far in 24 years. एबे next 10-year road map. जदि ये रास्ता में जो भी क्रॉस करी के आसुचु ये रास्ता का अपन देखिबे हमारा आत्मविश्वास बढ़िबो आमे करि पारिबु आपण माने कोई बार अछि हमक 10 वर्ष दरकार नहीं 5 वर्ष रे करिबार अछि. This 24 to 29 is going to be a game changing tenure for the state of Odisha. 29 to 24 जो भी स्पीड रे चलितिला now 24 to 29 will be much faster, much bigger, much inclusive, much green and much empowering. Odisha will not compete with other states now. Odisha will compete with the world. Our targets are different. महाप्रभुंकर आशीर्वाद रे आपण समस्तंकर सहयोग रे आशा करिबा से सेटा हबा के जाउची और कोई भी नहीं पिला माने बहुत व्यस्त हे गले भूख लगी गला मु एतरे सारी जाउची. I would like to hear all the speakers' speeches. Kahara bhi miss karuchi. And Honorable CM will be interested to listen to all your speeches. I assure you that we will put your speeches to the Honorable Chief Minister. Apana manaka bitaru, including Soumya and Samikya. Apana manakara jo bhi suggestion hochi. Sabu suggestion ke ama priya Mukhyamantri Gurutu asa hanabbe. Ame samasta misiki 2034 टारगेट तक सेट करिबा और को रास्ता रे हमें जिबू से रास्ता के भी हमें बाटा बाहर करिबा. जय जगन्नाथ. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. अनेक अनेक धन्यवाद महोदय. नुआ ओडिशा रूपांतरित ओडिशा नूतन ओडिशार मुख्य सारथी 5T माध्यम रे ओडिशार शासन और रूपांतरीकरण करने को दृढ़ संकल्प नहीं. आम पुनर्बार स्वागत करूँ निज हृदय गभीरतम कोणरू निजर आंदोलन भरा करताली माध्यम टे जोरदार ताली बाजिबा दरकार. समय वर्तमान संवर्धना पर्वर अनुरोध करने चाहबू माननीय 5T अध्यक्ष महोदय को महोदय वर्तमान श्रीयुक्त सुब्रत बागची महोदय को सम्मानित करेंगे संवर्धना बाढ़े. उपढकन मोमेंट दे संवर्धित करा जाउछि. आज रही प्रथम विश्व ओडिया भाषा सम्मेलन 2024 शेष दिवस रे अनुरोध करने चाहबू ओडिशा 2036 रे आपण मैंने समस्त अंशीधारिता करी ए मुहूर्त को आउ टिके बेसी स्वर्णिम करछन्ते. परे परे अनुरोध करने चाहबू महोदय वर्तमान डॉक्टर संतृप्त मिश्र महोदय को संवर्धित करेंगे. माननीय 5T अध्यक्ष महोदय आपण मान सम्मुख रे स्वहस्त रे सम्मानित कर सम्मान गुड़ी को बाढ़ुंट राज्य तरफ राज्य सरकार तरफ जोरदार ताली बाजिबा दरकार समस्त हाथ. अनुरोध करने चाहबू माननीय 5T अध्यक्ष महोदय को महोदय वर्तमान श्रीयुक्त स्वप्नेन्दु महांती महोदय को संवर्धित करेंगे. करताली अभाव घटुची सम्मान मंच रे उपढकन एवं मानपत्र दे करा जाउची. आपण मान को करताली रु ए मुहूर्त आउ टिके बेसी स्वतंत्र हे जिवो. आपणकर प्रत्येकटी कथा आपणकर प्रत्येकटी वार्ता पाई आमे गर्वित आमे प्रशंसित. धन्यवाद देवाई चाहबू श्रीयुक्त सच्चिदानंद पंडा महोदयंकर प्रत्येकटी अभिभाषण पाई अनुरोध करने चाहबू माननीय 5T अध्यक्ष महोदय सुवार्ता पाई तांकु आज ए मंच रे सम्मानित करेंगे संवर्धित करेंगे.
आम विश्वास नोबेल पुरस्कार पाई आपणकर प्रत्येकटी दायित्व समाज कल्याण हितर लगे भविष्य कल्याण हितर लगे अनुरोध करने चाहबू करताली माध्यम आम संबर्धित करूँ। वर्तमान जो दुई जन विद्यार्थी ए मंच निजर शब्द को रखते सम्मानित कर समय सर्वप्रथमे आम समीक्षा त्रिपाठी को ए मंच उपढौकन एवं मानपत्र दे सम्मानित करचु। परे परे सौम्य पट्टनायक को ए मंच सम्मानित कर सांगरे अछंती सौम्य पट्टनायक मानवर 5टी अध्यक्ष महोदय हाथ ए सम्मान को ग्रहण कर चमत्कार परिवेश अद्भुत आडंबर ए मुहूर्त अनुरोध करने चाहबू करताली अभाव न घटू। वर्तमान अनुरोध करने चाहबू समस्त उदाहरण तथा आज समीक्षक तथा आज टोटाल कार्यक्रम जी निजे संयोजक साजिले अध्यक्षता करते अनुरोध करूँ डॉक्टर सुब्रत बागची महोदय को महोदय वर्तमान 5टी अध्यक्ष को यह मंच सम्मानित करेंगे संबर्धित करेंगे। ये आज्ञा सम्मान तदूर्ध्वे कहीपर ये एक प्रकार भल पाइबा एक विश्वास ओडिशा को नहीं विश्व ओडिशा भाषा सम्मेलनी 2024 पर्व को नहीं एवं आज कार्यक्रम ओडिशा 2036 नवदिगंतर संभावना को नहीं धन्यवाद ज्ञापन करने चाहबू प्रत्यक्ष और परोक्ष भाव में जड़ित रही प्रत्येकटी अधिकारी गणकर उच्च पदस्थ अधिकारी गणकर एवं मंचासीन अतिथि गणकर आपण मानकर उपस्थिति आपण मानकर सहयोग आपण मानकर प्रत्येकटी शब्द रुद्धिमंत करछि अलंकृत करछि एवं आज समर्थ को आउ टिके बेसी रुद्धिमंत करछि। अनुरोध करने चाहबू समय वर्तमान चित्र उत्तोलन ए मुहूर्त समस्त मुखरे खुशी आनंद उल्लास एवं एतिकी कही आज यह कार्यक्रम को यही समापन करने सह राज्य सरकार एवं उपस्थित प्रत्येक को धन्यवाद ज्ञापन करने चाहबू। धन्यवाद ज्ञापन करने चाहबू गणमाध्यम प्रत्येक अधीक्षक प्रत्येक अधिकारी धन्यवाद देवाई चाहबू परोक्ष और प्रत्यक्ष भाव में जड़ित थी प्रत्येक जो मैंने मंच को साफल्य मंडित कर आज समस्त कार्यक्रम को आगक नबार निजर सहयोग को स्थापन कर कही मु शुभम धन्यवाद दूची आपण समस्त को धन्यवाद।